Hello and welcome students. Welcome to the question bank of the chapter of quadratic equations. Quadratic equations इस chapter में हमने काफ़ी सारी interesting चीज़ें पढ़ी, including the graphs of 6 different graphs of the quadratic equations depending upon the value of a, depending upon the value of the discriminant. Then we learned the factorization method, the formula method, और कुछ चीज़ें हमने पढ़ी quadratic equations with one common root, with two common roots, Descartes' rule, many important facts about quadratic equations. Now it is the time to apply all these concepts that we have learned. So let's start with the very first question of the question bank of quadratic equations. And the first question says, if x is equal to the root of 1 plus root of 1 plus root of 1 plus dot 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 till infinity, then x is equal to, and the options are A, 1 plus root 5 by 2, B, 1 minus root 5 by 2, C, 1 plus minus root 5 by 2, and D, none of these. So let's try attempting this problem. On the first looks of it, option C सही आंसर लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक क्वाड्रेटिक बनेगा और उसका आंसर कुछ आएगा. और क्वाड्रेटिक के जनरली दो रूट्स होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो उस वजह से ऐसा फील आ रहा है that option C might be the right answer. Although the options here given in this particular question are not very smartly designed, बट अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली द ऑप्शंस विल बी कंफ्यूजिंग एंड यू कैन नॉट लाइक pick an answer very easily. But again, if you want to guesstimate, I would have gone ahead with option C. Not very sure, but yes, guesstimate के हिसाब से option C सही आंसर लगता है. अब देखते हैं सही तरीका क्या है सॉल्व करने का. Now this question is a different kind of a question, one type of a question. So इस तरीके के questions को सॉल्व करने का तरीका हम अभी देखेंगे, जहाँ पे रूट ऑफ टिल इन्फिनिटी हो सकता है. इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का तरीका अभी देखेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, as it has been mentioned, x is equal to root of 1 plus root of 1 plus root of 1 plus so on. This pattern continues till infinity. So there are infinite roots and this is the value of x. Now it's obvious, since we know that it is a quadratic equations का chapter, यहाँ पे हमें square करना है. But even though अगर quadratic equations का questions है या नहीं ये नहीं पता होता, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा और राइट हैंड साइड पे 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ. Now as you can see, क्योंकि ये जो root of 1 plus root of ये चीज़ है, this and this is same because there are infinite terms going on, unstoppable number of terms. So this thing will be absolutely same as this. So basically now I can convert this as x square is equal to 1 plus x. Now suddenly all the roots have been eliminated just by squaring both the sides and figuring out that this is nothing but this. So this is replaced by x and suddenly you land up with a quadratic without all the root signs involved. So this makes your job simpler. Again, as I said, a typical kind of a problem. इस तरीके के problems को solve करने का ये तरीका है. एक बार square कर लीजिए, उसके बाद जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपको वापस दिखेगी, वो सब्सटीट्यूट कीजिए और क्वाड्रेटिक फॉर्म कीजिए. नाउ दिस क्वाड्रेटिक इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स. सो देयरफॉर एक्स बिकम्स माइनस बी. नाउ व्हाट इज बी ओवर हियर? A is 1, B is minus 1 and C is minus 1, the coefficients of x square, x and x raised to 0 respectively. So minus B is minus of minus 1 plus minus root of B square, so minus 1 the whole square, minus 4AC upon 2A. So this is the formula method और हमने A, B, C के values को plug in किया है, 1, minus 1 और minus 1. Now this will give you minus of minus 1 as plus 1 plus minus root of minus 1 the whole square is 1, minus of minus is plus, so plus 4 upon 2. So x का value जो है बन जाएगा 1 plus minus root 5
upon 2. As I said, this thing is feasible, 1 plus minus root 5 upon 2. But now there is a very interesting thing that we have missed out. Now as I said, guesstimate करके option C सही आंसर लगता है. Actually वो guesstimate तभी भी गलत था. क्यों? क्योंकि x is equal to root of this value. Now root of this value, root of 1 plus root of that thing, it's a root of some number, right? So when I say root of 9, what is root of 9? You can say that it's plus minus 3. What is root of 16? You say that it's plus minus 4. So in that case, it will be 1 plus minus root 5 upon 2. So option C is the correct answer for this question. So basically the guesstimate was right. It's just a tiny bit confusing when you see the minus sign here. So x का value negative होगा या नहीं, but यहाँ पे ये definitely हो सकता है क्योंकि root के values negative भी हो सकते हैं. Root of 25 is plus minus 5 then. So again, by that particular logic, both the positive and negative roots are feasible, and hence option C is the correct answer for this particular question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The second question. Now the second question of the question bank again is a typical kind of a problem on the lines of what we did in problem number 1. जैसे हमने problem 1 में किया उसी तरीके का problem है. So again a typical problem which will help you solve questions in competitive exams. The next question says the value of 2 plus 1 upon the whole 2 plus 1 upon the whole 2 plus and so on till infinity is, and the options are A 1 minus root 2, B 1 plus root 2, C 1 plus minus root 2, and D none of these. So again a similar kind of a question which we did in the first question. So यहाँ पे क्या है, 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon and so on. यहाँ पे 2 आएगा and similarly ये चीज़ infinity तक चलती जाएगी. So let us put this as y, जो value हमें ढूंढना है. Now this becomes now what I do is y is equal to 2 plus 1 upon, now this thing 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon, this can be substituted as y. Carefully see what is happening here. Now जो ये denominator में जो चीज़ है, let me just try and mark this out. This thing is again this thing, right? 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon, ये चीज़ यहाँ पे similarly दिख रही है, तो इसको हम y की तरह substitute कर सकते हैं और वही हमने किया. Now once we do that, you can see that there is a quadratic which is formed. Y square is equal to 2y plus 1. Therefore y square minus 2y minus 1 is equal to 0, and therefore the values of y which have been asked to us, इस particular चीज़ का value can be found out by using the formula method. So y will be minus b. Now a is 1, b is minus 2, and c is minus 1. So using these coefficients, let's use the formula method. Minus b would be minus of minus 2 plus minus root of b square, so minus 2 the whole square, minus 4ac upon 2a. So minus of minus 2 will be plus 4, plus minus root of minus 2 square is 4, 4 plus 4 is root 8. So this is root 8 upon 2. Now if we try to calculate this, root 8 is nothing but 4 into 2, तो उसको root 8 को हम 2 root 2 की तरह लिख सकते हैं. So 4 plus minus 2 root 2 upon 2. Now this numerator में से हम 2 common ले सकते हैं, तो 2 common लेने के बाद वो denominator के 2 से cancel out हो जाएगा. So 2 plus minus root 2 will be the answer for this particular question. Now as you can see, 2 plus minus root 2 is the answer for this question. But now if you notice here, in this particular case it's very evident that the value of y is greater than 2. Now since the value of y is greater than 2, the answer for this y is 2 plus root 2. So the correct answer is only 2 plus root 2. 2 minus root 2 won't be considered क्योंकि ये 1 upon जो चीज़ है, this is again a positive value.
and since this is a positive value, 1 upon that positive value will give you again a positive value, and 2 plus a positive value would always be greater than 2. It can't be less than 2, and 2 minus root 2 is a number less than 2, so we discard that, and hence the right answer is 2 plus root 2. And 2 plus root 2, as you can see, यहाँ पे this the answer, since 2 plus root 2 is not there, it's 1 plus root 2, so basically there is a tiny mistake that we have done here itself. Minus into minus is plus 2, so यहाँ पे 4 नहीं है, ये 2 है, और यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 प्लस रूट 2 आता है, यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद ये 1 प्लस माइनस रूट 2 बचता है, एंड वी जस्ट डिस्कस्ड व्हाई द माइनस हैज टू बी डिस्कार्डेड. माइनस हैज टू बी डिस्कार्डेड बिकॉज देन 1 माइनस रूट 2 विल बी नेगेटिव, एंड दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव एज इट इज़ वेरी एविडेंट. ये 2 से बड़ा होना चाहिए, एंड 1 प्लस रूट 2 विल गिव यू अ नंबर ग्रेटर देन रूट 2 अराउंड 2.41, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी बी, 1 प्लस रूट 2. So two problems of similar nature किस तरीके से हमें solve करना है. Whenever there is an infinite series, as you can see in both these problems, we figure out the recurring term. जैसे यहाँ पे 2 plus 1 upon the recurring term exists here, so that is substituted by y, forming a quadratic. Get the value of y, choose the right value of y which fits there. Now here if you notice, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, रूट नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड हो गए, बट यहाँ पे ये वैल्यू जो है y का 2 से बड़ा ही होगा, सो नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं होंगे. सो अगेन दैट इज जस्ट टोटली अपॉन ऑब्जर्वेशन, बट अगेन द बेसिक ट्रेंड इज फाइंडिंग द रिकरिंग टर्म, फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट टर्म, इन दिस केस y, and in the above term x.